Yeah, so we welcome all of you to joining us here today, Nivesh.com Investments webinar. I am Yogesh and I have along with me Aditya Kachru. We are serving wealth industry. We are serving as wealth experts, having combined experience over 30 years plus, and specially servicing HNIs, ultra HNIs, family offices throughout our career. Being bankers in the past, we had an intent to work very closely along with the clients on their personal financial needs. And I'm proud to say that it's been an amazing journey, helping people. And it's a very noble business that we are in, helping with the right intent, with the transparency, with the full confidence that what is being offered is being delivered to them, because we have seen while working with various institutions certain lacunas over a period of time. And we want and we promise that we want to avoid those lacunas in the business that we have been together generating, creating, developing, and nurturing is Nivesh.com. So today's topic is common mistakes. Yeah, there are five common mistakes that we're going to discuss today that can be very disastrous in wealth creation, right? And we will take examples from the real world, especially Indian scenarios, whether you are a seasoned investor or you are an HNI or you are a new starter. So basically you just want to start your wealth journey. So whether you are a new person, HNI, or a seasoned investor, these are the five pitfalls which are very common and universal in nature. So let's discuss, and I presume after this session you will be at least having that sense that you are not indulge or addressing these mistakes in your wealth creation journey. So let me request my colleague Aditya Kachru, who is a wealth expert, along with us to start the session and address a couple of the mistakes, and then we'll chip in together. And we'll also request to all of you, if in case during the course of the session you find anywhere any query, you can post in the chat box. We will try to answer all of your query very patiently, and if the time do not permit, maybe we'll take up it separately also. Thank you so much. Over to you, Adi. Let's start. Thank you, Yogi. Yogi have briefed about our experience about our company. Uh, so uh, you know these disastrous mistakes which we are today going to discuss, put together me and Yogesh. Actually, this is coming from our experience. We have been meeting clients day in day out, and these have been whenever we meet clients, uh, over the period of time we have seen these mistakes actually is very often, and it is actually common in everybody, but people don't realize it, and these becomes habit over the period of time. So when they come to us, we actually observe these things, and that's how it became our experience, and we thought to share it with you. We actually crystallized this only into few five mistakes, because we have a short of time, but although there are many other case studies which we can share. So I think according to the time, let's move ahead. So this is about our company. I missed out sharing while Yogi was sharing it with you. So we are a digital first platform handling HNI, NRIs, and family offices. Our whole focus is towards long-term risk managed and wealth creation. We are 7 years old startup, Nivesh.com, and within that there is a private wealth division which directly deals with portfolio management of our direct customers. So, first mistake which I would like to observe is that it's a no roadmap. So when we meet our clients, many such clients. So what happen is that they have done several investments already. But what a problem which they face is that they don't know where they are. They are standing as on today. So
and whenever there is some abrupt time comes, some economic change comes, then they look out for experts or a wealth experts or their CA or their family friends that what to be done on their these existing investments. So I'll tell you the case. Last year, in year 2024, which is a very in a distant, not very distant memory, in the news you would have heard that 39 lakh SIP accounts got suddenly closed. In 2024, when the market last 3 years were such a booming, and suddenly in 2024, 39 lakh accounts got closed down. ये हो क्या रहा था? Nobody understood. Actually, these were those people who actually started themselves without any giving a roadmap. That यार किसी से सुन लिया कि SIP अच्छा है, किसी से सुन लिया म्यूचुअल फंड्स के स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, and they might have started by having that excitement, but suddenly in the month of September, market turned other way, and वो उसको digest ही नहीं कर पाए कि their market can go negative, and even 3 months, 6 months old SIPs, seeing them negative, they stopped their investments. So why they did it is that because they don't have any written roadmap, they don't know why they are investing. So problem is without even having any goals, they are doing these. Then problem with them also is that I will also discuss it in detail, that they are not open to market shocks, because every asset class goes through some cycle, so it is open for shocks also. There's a good time, there is a bad time. If you are not aware about those things, there is no transparency while buying those, and nobody have told you, have not come across through a right channel, then these shocks will be there, and that will be disheartening as well for any fresh time, fresh investors. So when there's some shock comes, any liquidity need comes, you feel disheartened, and when you try to liquidate it immediately, and you will feel and face losses. Adi, we need to add Hindi also, I think, along with English if you are comfortable. Yeah, sure, we'll try to add that as well. तो हमारे एक और पॉइंट है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट, आजकल बड़े स्लैंग्स चलते हैं जेन एक्स एंड मिलेनियल्स में, एंड आजकल बिल्कुल न्यू जो यंग पॉपुलेशन में, दैट दे ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग विच इज न्यू, टू एड ऑन इन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो द सेम थिंग कम्स इन. सो अगर IPO trend है, that every next IPO have to be invested, have to put across money, because there is some magic which will give them double, triple, or some bumper returns, which is actually literally very, very observed action, because it's because ultimately when you have a money, if you put it on a regular basis, you will definitely do something well with that. But going after quick money, I will show some data also on this, that recently there was one in the news coverage, one editorial which was talking about this. In coming slide, I'll show you what data was talking about. So, uh, and same way, there is people also invest in real estate. When we meet clients, they also look for some asset class which is tangible in nature, something which can't go, never go downward, which will only go up and up, on one sided up. So they see that real estate can't go down, and this is kind of a narrative which is made in the market by brokers and by many other, even our relatives, our chacha taus, that real estate में लगाओ और वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं. But I can show you the instances where markets, in fact, Delhi NCR is the large real estate market. Mumbai itself is a large real estate market. There have been decades where no money have been made. Even in the posh areas, there have been 10% downfall. So there is a lot of material in the newspaper and the data where people have bought in 2011 to 2013 period, and today the market have been in the same price, and they're just getting the exit. Just pre-COVID, there was no returns made. So it is about this full cycle. So somebody who invests in real estate has to go through some full life cycle, then you make return, which is actually a 20, 30 years, not a 4, 5, 6, 7 years or a 10 years, even it becomes very small time. So it's a myth that prices never fall. I don't know, I know among you, all you are here, how many people are agreeing to it. But when we discuss this with client, they feel shocked. And when they look up in their portfolio and then find out
that आज मुझे अगर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिक्विडेट करना पड़ेगा, so they will notice that 10 to 20% market price से नीचे बेचना पड़ता है. So that is what is against the real estate as an asset class. So it is a narrative which has been built over the years. Property can only be stagnant, can't go down or maybe go up. That is just a narrative. But there have been the times when the market and any asset class goes through the bad patch. So this is particularly the editorial which I was talking about. I know it is very small, visible नहीं होगा आप लोगों के लिए. तो इसमें से मैं कुछ छोटे-छोटे कुछ points इसमें से आपको बता देता हूँ. So it's a very important thing that home prices do fall. Just the prices of stocks, bonds, gold, and only don't fall. It's also the real estate which falls. So it's a narrative which they have built in. So home buyers, in South Mumbai, they are talking about in 2013. It's a posh area, South Mumbai. So there have been instances which is recorded by one of the international database, real estate database, Liasis for us, which they are showing that there is a 10% stagnant market. So and in that 10 years, there's only 10% market have gone down. Almost 10% it was down in these 10 years. And and that is what brokers made of, because whenever you buy high rises, the buildings only depreciate. Of course land has a value, but building only depreciate. There's a lot of maintenance. So over these 5-10 years, on one side you lose your capital plus maintenance and lot of other stuff. So it's not one sided. So you have to buy any asset, buy gold, buy equity, buy debt, buy real estate, buy whatever. But there is a full cycle. There is no short term game in any of the asset class. So this is one of our client who was in distress, and he was into manufacturing. Manufacturing as a sector is very, very volatile. It goes through various cycles. So when he came to us, he was having very bad time. He had the assets, all mostly in the hard assets, but because his industry was going through a bad time, and that period he needed to get some funds for getting raw material and to survive. And then he came to us, and then we told him that it's very difficult. If you would have financial assets with you, we could have liquidated that easily at the market rate. But as of today, you have all the hard assets to he can't get money immediately. So even he went to the bankers. So bankers they actually did a valuation, and over the 20-30% discount, then he was not agreeing to it. Ultimately, he was forced to sell his assets, in fact 15 to 20% down the market value. So what was the use of creating so many assets, hard assets? So that is the balance which we have to look in. And a lot of us, in our middle segment also, a salaried segment also, they keep on buying assets as and when their bonuses comes or their accumulation happens. They keep on, because it's a tangible, they attract towards it. But one house is enough for you, and try to create a higher financial assets, which is liquidable. So yeah, this was the topic. This was the recent editorial covered in the Hindus, where the actually Times of India, in fact, it's just last week only. So it is covering some of the key points that what it was saying is that there are 45 crore Indians play online games. Now the government have curbed this industry. Now they have stopped this, but although there's a 45 crore Indians which are were enrolled in playing, and 20,000 crore was the losses accumulated with these people. So where was this money? These are our people only which are investing. So there is no direction at all. So that is what I was referring to. So because their friends are investing, around them, their circle is like this. So they are tend to go with it. Now there are people, even the SEBI did a study that out of 191 people in the FNO loses money. And it is not a small money they are losing. Consistently last 5 years, FNO's volumes have gone up. And it's a humongous money which they are losing each and every day. And that doesn't mean that money is not important. It's a very important money. They could have invested
for these 4 or 5 years, and it could be a good lump sum. But because they are all up going for behind that quick money, that is how it is getting destroyed. So important piece of wealth is getting destroyed there. Then there is an IPO chasing. Every next IPO people are putting money. So that is what we are also facing with existing clients, because they want excitement in everything. But wealth is only made with the boring stuff. If you would have seen and looked into uh, behaviors of large investors globally and even Indians, look at their portfolio. They are sitting on that for tens and 20 years, buying those good quality stocks, sitting on those mutual funds, sitting on any assets which they are very convinced about. But not daily. Nobody have made good money in the trading. That's for sure. Only these influencers make money from their videos. Every time they come and they give you the rosy ideas that every trade is winning trade, and that doesn't happen in the real life. So this is what this article is talking about. So government have already curbed it, but then still there's a lot of things which are still open. FNO is open, IPO is open. So you yourself have to think in and talk to yourself that what is the need of doing these stuffs. So what we propose is to our client, you should always have a financial GPS. You know, uh, it's a kind of a goal positioning system where you should know before any investment that clear why I am investing, for what goals I am investing, how much time I will be investing for this, and what risk I am taking against it. These are the few things which always should be in their mind. Even if you are sitting with any wealth expert, you should ask if he's positioning any product to you, that how it is in line with my goals. So you should be very clear that there are various products in the market which we will be discussing. Yogesh will be taking you through in those pages, but it will be very clear that what is right for me, what is not right for me. So next very important mistake, apart from without a roadmap, is skipping the risk cover. Now we meet many clients which are a higher tax bracket also. That means they are earning about 50-60 lakhs. They are CEOs and CFOs of the company also. They are doctors. In fact, they are architects. Very very good professionals. They have created a lot of assets. So when they come to us. And they talk about all the asset class and take our advice, we just see first that how much they are covered, you know and what we are surprised by is that hardly a health cover, stature of people are earning 60 lakh and health cover is at about 8 lakhs, 10 lakhs. And that if you go to a decent hospital in your nearby, or go to likes of Max, or any large hospital, you will be set off with 10 lakh to 12 lakhs within a 5 days. So it's these covers doesn't stand at this, at least at that income level. But at least what we see is that before going any investment, you should look in how much health cover you have today for your family, how much life cover you have with your family, and very important, before any investment, in fact, do you have an emergency fund? If I lose my job, and the scenario is such, people won't get next job within next 2 to 3 months, and they take sometimes 6 months, you have to sit at home. So you need to have an adequate emergency fund as well, which can take care of those times of expenses, at least for a few months taken care, so that you are not pressurized to exit out of your crucial investments. So people exit just because, immediately exit their asset just because they don't have an emergency fund. So that is one of the important risk coverage which we like all of our clients to have. So these are some idea, like what I already talked about. So medical inflation is going beyond 12 to 14%. You look at just 3 years back, what was the cost of any surgery, and today just go back. So 2 lakh rupees of surgery today is costing about 3.5 lakhs in matter of just pre-COVID and post-COVID. Just compare. You will come to know that my 5 lakh of coverage is nothing. I have to up that coverage. So what we come out is that we have some protection formula which you can also look in for yourself. Is that you should at least have
in the case of a life term cover, which is very important, which can subside your in case there is a death happens, earning member dies for some reasons, at least his income can be replaced. So at least you should have a 15x to 20x of the annual income of on the life cover side. And on the health side, we have some mental formula which can be used, is that at least you should have a coverage of 50% of your annual income. So if you're earning 10 lakh rupees, at least you should have a 5 lakh rupees of coverage for your family. Plus, look at in last 3 years how much medical expenses you were into. Just average that and add that much amount. If it is 2 lakh or a 2.5 lakh kind of an average coming, add that as well. So 7.5 lakh rupees of cover at least to start with. And as your income grows, buy top ups. And critical illness is additional, because now these terminal illnesses are very, very frequent. Cancer is every second, third person is now getting diagnosed cancer, various cancer diseases. So you should have that as well. But at least base and super top up should be at least covering your family with 50% of your annual income plus some more of your expenses as well. And for the emergency thing, at least you should always keep a 6 month of expenses with you. It could be a liquid fund, it could be your saving account, but keep it with you handy. That's where you safeguard your wealth. You don't liquidate in bad times your hard assets or your good quality assets. Now, I will ask Yogesh, to take us forward, from onward these mistakes. Yeah. Yeah, Adi, thank you so much. You have beautifully explained the previous two. And just to take a reference, आपकी ही पिछले स्लाइड से रेफरेंस लेते हुए मैं जस्ट शेयर करूंगा कि एफएनओ का जो नंबर आप बता रहे थे ना, वो सेबी का डेटा, दैट सेबी सेज दैट लास्ट फिस्कल ईयर 1.06 lakh crore, that's the number, retail trader have lost in the entire financial year. It's a huge money, राइट. व्हेन वी से कि 1 लाख करोड़ मार्केट में ऐड होना है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये सेक्टर बूम करेगा. अभी एफएनओ में 1.06 लाख करोड़ हम लॉस कर चुके हैं, और कौन? रिटेल ट्रेडर्स लूज करें. तो द डेटा सेज आउट ऑफ एवरी 10 रिटेल इन्वेस्टर्स 9 हैव लॉस्ट द मनी, राइट. ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज रिटन ऑन योर स्क्रीन, विच इज इम्प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन. जो चीज हमें एक्साइटमेंट देती है, जो चीज हमें इम्पल्स क्रिएट करती है कि हमें ये खरीदना है, ये करना है, और हम उसका अपने गोल प्लानिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते, कोरिलेट नहीं कर पाते, वहां पे जाके हम लोग को प्रॉब्लम होता है. तो अब हम इसको समझते हैं कि इम्प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये बहुत कम हम डिस्कशन कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी common mistakes, but we are just have chosen 5, and this is the third one, which says that because लोगों को क्या होता है, मार्केट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि सर कितना रिटर्न आ जाएगा, 20% आ जाएगा, राइट, 15% आ जाएगा, एवरेज रिटर्न 15% आ जाएगा. अब ये परसेप्शन लेके जब इन्वेस्टर मार्केट में जाता है, तो उसको लगता है यार 15-20% से रिटर्न अगर कोई कम बात कर रहा है तो वो ठीक नहीं है. देयर इज अ परसेप्शन मिसमैच. तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन रेशनल होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अनरेगुलेटेड स्कीम्स में भी चले जाते हैं, है ना. इवन पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि क्रिप्टो में चले जाओ, बहुत अच्छा पैसा बनेगा. तो ये अनरेगुलेटेड स्कीम्स में चले गए, आप किसी सिक्योरिटी में चले गए जिसका कि हमें उतना ड्यू डिलिजेंस हमने नहीं किया है, और किसी के कहने से कर देते हैं. जस्ट हम सुनते हैं कि माई कलीग आदित्य हैव बॉट अ फ्लैट इन नोएडा, सो आई शुड आल्सो हैव वन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग माई गोल्स. अपने गोल्स को ना परवाह करते हुए मैंने क्या किया, सुना कि आदित्य काचरू का एक फ्लैट है नोएडा में, तो मेरा भी होना चाहिए, तो मैंने खरीद लिया. यार मेरा, आपका नंबर है 102, मेरा 103, आप ही देख लेना मेरा एसेट्स भी, कभी जाओगे तो मेरा भी देख लेना. तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है. और एक अभी जो एक ट्रेंड क्रिएट हुआ है, स्पेशली जो ये डेटा सेबी ने पब्लिश किया है कि एफएनओ में पैसा लूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमेशा चाहते हैं कि वो भी कोई मल्टी बैगर पकड़े.
वो भी कोई ऐसा स्टॉक पकड़ें जो आज 10 रुपए है तो कल 100 हो जाए। लेकिन भूल जाते हैं एसेट एलोकेशन इज द की। क्या है? एसेट एलोकेशन इज द की। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको समझाता है, क्या समझाता है? डॉक्टर आपको समझाता है कि आप सुबह उठिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, उसके बाद अपना रूटीन एक्टिविटी करिए, शाम को टाइम से घर पहुंचिए, अपना टाइम से डाइट लीजिए, उसके बाद रेस्ट करने टाइम से जाइए और फिर अगले मॉर्निंग सुबह टाइम से उठिए। राइट? दैट इज हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, इन आवर लाइफ। सिमिलरली, जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी में होते हैं तब हमें एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे एक मील बना हुआ है, उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू पार्डन अस इफ इन केस समबडी इज नॉन वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियन, प्लीज अवॉइड। इट्स जस्ट दैट इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है कि आपको जिस भी तरह का आप डाइट लेते हैं उसमें आपके पास प्रॉपर बैलेंस हो। सिमिलरली यहां पर भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी क्या होता है, एसेट एलोकेशन इज द की। राइट? जनरली दो एसेट क्लासेस हम ब्रॉडर समझते हैं, और एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास होता है कि एक इक्विटी हो गया, एक डेट हो गया, और एक ऑल्टरनेट एसेट्स हो गया। अब इन एसेट्स को हमारे गोल के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे कैश फ्लो के हिसाब से हमें आगे जाना होता है। बट जाएं कैसे, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे जाएं। तो अभी हम समझेंगे व्हाट आर द एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और की फैक्टर्स। कौन से वो की फैक्टर्स हैं जो हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप को जानना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को। राइट? तो अब हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे जो फैक्टर्स हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से इवैल्यूएट करना है, वो कौन कौन से हैं। पहला, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डस्टबिन में डाले, ना मेरे पास है ना आपके पास है। राइट? तो हर व्यक्ति सबसे पहले पूछता है क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है। पहला क्वेश्चन, सेफ्टी इज द फर्स्ट फैक्टर। देन सेफ्टी के बाद मिलेगा कितना, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई आप मेरा 100 रुपए लगा रहे हो, एफडी का रिटर्न दोगे, इक्विटी का रिटर्न दोगे, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, क्या मिलेगा, दैट इज रिटर्न। तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, यू शुड हैव रेशनल एक्सपेक्टेशन। तो जब एक व्यक्ति, एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने चलता है तो उसके पास क्या है, एक डेट पोर्टफोलियो है, राइट, एक इक्विटी पोर्टफोलियो है और एक ऑल्टरनेटिव एसेट्स पोर्टफोलियो है। हर एसेट क्लास का अपना अपना एक रिटर्न पैटर्न होता है। राइट? इक्विटी कभी ज्यादा देता है, कभी कम देता है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है। एफडी आपको कांस्टेंट रिटर्न देता है। राइट? रियल एस्टेट आपको एक पैटर्न में रिटर्न देता है, कुछ साल ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा स्टेगनेंट रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्टेगनेंट रहेगा, इस तरह से जेड शेप में, इस तरह से कुछ रिटर्न देता है। तो हर एक एसेट क्लास का अपना एक तरीका है रिटर्न देने का। और हम जब अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि मेरा गोल कौन से ईयर में फॉल कर रहा है, उस समय मुझे लिक्विडिटी मिलेगा कि नहीं। थर्ड फैक्टर है लिक्विडिटी। राइट? तो जब मैं गोल अपना डिसाइड करूं तो लिक्विडिटी ध्यान रखूं। ऐसा ना हो जैसा अभी मेरे मित्र ने बताया आपको कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट 10% नीचे गिर गया और फिर डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, है ना। तो जब अगर मेरा गोल है तो उसी गोल के समय या उसके बाद मुझे पैसे की जरूरत है, तभी मैं उसको प्रॉपर प्लान करूं और इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखूं कि जब मुझे पैसे की जरूरत होगी क्या ये पैसा अवेलेबल है, क्या ये पैसा एक्सेसिबल है। अगर है, प्लीज गो हेड, हम कर सकते हैं अपने गोल के हिसाब से। देन अगला फैक्टर आता है टैक्स एफिशिएंसी। तो सेफ्टी एक फैक्टर, रिटर्न कितना मिलेगा दूसरा फैक्टर, लिक्विडिटी है कि नहीं है वो ध्यान रखना है पहले से, टैक्स एफिशिएंसी है कि नहीं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि टैक्स बचाने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। बोले यार मेरे फ्रेंड ने एलआईसी लिया हुआ है, मैं भी एलआईसी ले लेता हूं। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एलआईसी बुरा प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 6% ही मिलेगा या 5% ही मिलेगा। अगर एलआईसी से आपका एक्सपेक्टेशन 20% का है, 15% का है, तो आप गलत ट्रैप में जा रहे हैं, तो उसमें ना जाएं। ये बहुत जरूरी है कि टैक्स एफिशिएंसी उस इंस्ट्रूमेंट का है कि नहीं। एंड फॉर स्पेशली एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, उनके लिए तो ये कंसर्न होता है। क्या कंसर्न होता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द टैक्स इन द पोर्टफोलियो। राइट? मैं अपने रिटर्न को 2% कैसे बढ़ाऊं, कीपिंग द सेफ्टी इंटैक्ट, द फर्स्ट पॉइंट इंटैक्ट। देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मेरे हिसाब से जब मैं चाहूं
अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करूं, एंट्री एग्जिट करूं, रीबैलेंस करूं, वो फ्लेक्सिबिलिटीज उसमें है कि नहीं है। तो ये 5 फैक्टर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझने। अब हम आगे देखते हैं कि टैक्सेस कैसे हमें परेशान करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें दिक्कत करते हैं, या कैसे ड्राइव करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टनल विजन लेके चलते हैं। टनल विजन मतलब कि मुझे ये समझ में आता है तो मैं यही करूंगा बस, राइट। एक विजन लेके चलते हैं। जैसे मान लो किसी आप रियल एस्टेट व्यक्ति से मिलेंगे तो वो कहेगा कि यार आप क्या रिटर्न बनाओगे साहब, इक्विटी में 20%, 10%, मैं तो 50% बनाता हूं, राइट। एक पर्टिकुलर एक सर्कल होता है हमारा, सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, और एक हमारा रिसोर्स होता है जहां से हम टेक्निकल नो हाउ, जहां से हम नॉलेज लेते हैं, समझते हैं, एक सर्कल होता है। और फिर हमें लगता है कि यही मेरा विजन है, मुझे यहीं से रिटर्न मिलेगा। कुछ लोग उसमें बेटर हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि रियल एस्टेट बेकार है, हम ये नहीं कह रहे इक्विटी बेकार है, हम ये नहीं कह रहे कि LIC बेकार है। और हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आप टनल विजन में ना जाएं। यू शुड हैव, जैसे एसेट एलोकेशन है तो आपके पास ऑल्टरनेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। बिकॉज याद रखिए, साल में 12 महीनों में से 3 महीने बारिश होती है, जैसा आज दिल्ली में हुआ है, राइट। तो बारिश के समय में बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेनी डे के लिए छाता रखना पड़ेगा। छाता नहीं रखना भी चलेगा, लेकिन ये याद रखिए भीग के जाना पड़ेगा अगर ना छाता नहीं है तो, राइट। तो इसलिए बेटर क्या है, छाता मींस कवरिंग, एनी कवरिंग, यू मे हैव कार आल्सो, दैट इज आल्सो अ कवरिंग। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे कवर करके चलना है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की चॉइसेस, कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, और क्या एसेट एलोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, क्या लिक्विडिटी लेके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा क्या है कि हमें जो भी प्रोडक्ट चूज करना है उसकी टैक्स एफिशिएंसी को अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, ATC के लिए लोग बाय कर लेते हैं तो ATC में ही चले जाते हैं बस, कि यार LIC खरीद लो, मेरे फ्रेंड ने लिया है, लास्ट डे है, लास्ट डे में टैक्स फाइल करना है, आज ले लो बस, आज ही मिल रहा है, कल मिलेगा नहीं, है ना। रिटर्न क्या मिलेगा वो पता नहीं है, वो इवेलुएट नहीं किया। जनरली हम लोग यंग एज में ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, हमने भी किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टेक सुधारे नहीं जा सकते, मिस्टेक सुधारे जा सकते हैं, और बहुत अच्छे से हम उसको प्लान कर सकते हैं। और ये डेट, जो हमारा वेल्थ क्रिएशन का जो ट्रैप है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उससे हम बच सकते हैं। कई सारे लोग यूलिप में, एंडोमेंट में, सब प्रोडक्ट क्लास अच्छा होता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर गोल है, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है, राइट। और एक फैक्टर आता है कि हम टाइम से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ITR में सरकार ने बढ़ा दिया टाइम कि चलो आप 15 सितंबर तक दे दो। अभी भी मुझे लगता है कुछ लोगों ने ITR फाइल नहीं किया होगा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि हमें तो लास्ट डे जाना है, जिस दिन पोर्टल हैंग करेगा इनकम टैक्स का, उस दिन हम लॉग इन करेंगे, बोलेंगे अपने CA को आज ही कर दो दादा, आज के अलावा हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये हैबिट हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये भी हमारा फाइनेंशियल बिहेवियरल पैटर्न एक होता है, उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, राइट। आप समझते हैं कि ये सारी गलतियों से बचना कैसे है, तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द राइट वेज, राइट, वी कैन डू। आदि, इफ यू कैन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट, या। सो राइट वेज में क्या है कि प्रोडक्ट चॉइसेस जो है, हमारा एसेट मिक्स होना चाहिए, गोल के हिसाब से होना चाहिए, टाइम होराइजन होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। फिर हमें जो डेट प्रोडक्ट है, जैसे आप देख रहे हैं, NSC, PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम, दीज आर ब्यूटिफुल स्कीम्स, बट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड वेल्थ क्रिएशन, एज थोड़ी देर पहले आदित्य ने बोला था कि बोरिंग जर्नी है, 100% बोरिंग जर्नी है, और वेल्थ और लॉन्ग टर्म जर्नी है। इम्पल्स नहीं, हमें हमें प्रॉब्लम फेस नहीं, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग आज के सिनेरियो में समझ रहे हैं कि यार क्या होगा इंडिया का, ट्रंप इतने सारे टैरिफ्स लगा रहा है, इंडिया तो बचेगा ही नहीं। सॉरी, मैं आपके एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप सबको याद हो, मोटा मोटा मैंने नोट किया था 1998 में, मैं आपको एग्जांपल आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। 1998 मई में उसके आसपास हमने पोखरण का टेस्ट किया था, राइट। पोखरण गुजरात में टेस्ट किया था हमने परमाणु बम का, 1998 में। और हमारे पास बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे US की तरफ से, राइट, बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे।
लेकिन उसके बाद 1998 से इंडिया उस समय पीछे नहीं हटा, राइट। वो एक स्ट्रेस था, लेकिन उस स्ट्रेस को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, राइट। और उसी के बाद ठीक 2 साल बाद मार्च 2000 में मिस्टर बिल क्लिंटन, हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, सबसे लंबी जर्नी इंडिया में 5 दिन का स्टे किया। कितने दिन का? 5 दिन। ऐसा क्या हुआ 2 साल में कि हमने इतना सब कुछ किया? और कई सारे लोग सोचते हैं कि यार ये ट्रम्प इतना सारा प्रेशर डाल रहा है, बड़ा इरेटिक व्यक्ति है, काम करेगा नहीं करेगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। इट इज हाउ यू टेक इट, राइट। लेकिन हंसना मत भूलिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी रोकिए नहीं, कंसिस्टेंटली करते रहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रंप की हमारे ऊपर या यूएस गवर्नमेंट का जो इम्पोजिशन है टैरिफ्स का, इसको भी हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा डेटा कह रहा है, ऐसा इन्फ्रेंस आ रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो हम उसको समझेंगे। मैं और आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि तब समय के थोड़ा सीमा कम है। उसके बाद हम देखते हैं ईएलएसएस, एनपीएस, यूलिप, ऑल आर गुड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब, लेकिन अपने गोल के हिसाब से। अब आते हैं अनदर मिस्टेक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज कल करता हूं, राइट। योर बॉस सेज कि आप काम कब पूरा करोगे, आप बोलोगे बॉस बस कल मैं आप कर दूंगा, है ना। ऐसा होता है। स्कूल में टीचर सेज कि आपका होमवर्क हुआ क्या, कि मैडम कल कर दूंगा। ऐसा ही इनकम टैक्स भरा क्या, बोलो भी लास्ट डेट दूर है, भर दूंगा। ऐसा ही हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या होता है, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, यार मैं कर लूंगा ना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमने देखा है, स्पेशली एचएनआई, उनको तो कई बार 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है अपने सेविंग बैंक के अकाउंट को पैसे को इन्वेस्ट करने में, बिकॉज दे आर सो बिजी, राइट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। समझ लेते हैं कैसे। कुछ लोगों का फियर होता है कि मैं कहीं पैसे ना खर्च कर दूं। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा होता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, है ना। कुछ लोग मेंटल अकाउंटिंग करते हैं। मेंटल अकाउंटिंग क्या है? ये जो पैसा है, मैंने उस पर्पस के लिए रखा है, घूमने के लिए रखा है। से मेरे को बोनस मिला, मैंने घूमने के लिए रखा है। अरे बाबा, बोनस इज पार्ट ऑफ योर सैलरी ओनली, योर परफॉर्मेंस ओनली, राइट। उसको आपको प्रॉपरली सेव करना है, जिससे कि आप अपना सीटीसी को जल्दी से रिप्लेस कर पाए। तो ये सारी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। आप लोग निवेश.com पे जा सकते हैं, पर्सनल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनको प्रॉपरली कैसे प्लान किया जाए। आगे चलते हैं, डिले का इंपैक्ट समझते हैं कि इंपैक्ट क्या है। अभी इफ यू कैन जस्ट, या तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, बहुत बड़ा अमाउंट हम यहां नहीं दिखा रहे हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको कि 25,000 रुपए का एसआईपी एक व्यक्ति ने 35 ईयर्स में किया, जिसका नाम है सचिन। स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, सचिन ने 35 साल की एज में 25,000 रुपए मंथली एसआईपी स्टार्ट किया, और कब तक किया? 60 साल तक किया। दूसरा व्यक्ति सौरभ, सेम एसआईपी 25,000 रुपए मंथली 40 साल की एज में स्टार्ट करता है, ठीक है, और 60 साल तक करता है। अब कॉर्पस में डिफरेंस देख लीजिए आप। हमने एक ग्रोथ रेट एज्यूम किया 12%। ग्रोथ रेट में सचिन वही 60 साल तक कितना क्यूमुलेट करता है? 14.74 करोड़। और कॉस्ट ऑफ डिले क्या आया? 2.25 करोड़। अब एक स्टेप फर्दर जाते हैं, एक स्टेप फर्दर। अगर यही पैसे में से उसको पेंशन निकालना हो, 60 साल के बाद रिटायरमेंट इनकम चाहिए, राइट। अगर रिटायरमेंट इनकम मेरे को चाहिए और 1 लाख रुपए मुझे मंथली निकालना है, विड्रॉ करना है, विद 5% इन्फ्लेशन, मैंने एक एजम्पशन लिया, तो सचिन अभी भी बहुत आगे है किससे? सौरभ से। तो कॉस्ट ऑफ डिले कितना आप देख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ डिले 10 करोड़ रुपए का डिले है, 10 करोड़। एक नॉर्मल व्यक्ति अपने लाइफ में, एवरेज नॉर्मल व्यक्ति लाइफ में 10 करोड़ रुपए एस्पिरेशन लेके चलता है कि मैं पोर्टफोलियो बनाऊं, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑफिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा एचएनआईज, देयर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, बट वी आर सेइंग एक जनरल जो व्यक्ति यहां स्टार्ट कर रहा है, कुछ लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट अपना, आप सब में से, है ना। हम भी उसी जर्नी का हिस्सा हैं, हम भी सेविंग्स कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिले देखिए आप कितना ज्यादा है, राइट। तो 10 करोड़ रुपए का डिले कोई कोई इमेजिन कर सकता है, लेकिन ये है डिले का कॉस्ट। तो ये समझना है अपने को, है ना। तो आगे चलते हैं। अब इसको इसके लिए राइट अप्रोच क्या है? टाइम है कि डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, राइट।
आज ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम आ गया। आज रशिया ने यूक्रेन पे बहुत बम डाल दिया। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि बम डाल दिया तो आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप अपना गोल के हिसाब से प्लानिंग करो कि क्या चाहिए। और एक्सपर्ट्स के साथ आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं आई एम द एक्सपर्ट, यार मतलब मुझे एक्सपर्ट की क्या जरूरत है। नहीं, हो सकता है आपको जरूरत ना हो। जैसे बुखार होता है तो बुखार में हो सकता है पैरासीटामोल ले लें, लेकिन अगर 4 दिन बुखार हो जाए ना तो डॉक्टर को पूछना पड़ता है कि ये उतर क्यों नहीं रहा। तो समझना क्या है, समझना यहां पे केवल इतना ही है कि डिसिप्लिन प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग, जैसा आदि ने पहले पॉइंट में बताया कि रिटर्न कुछ नहीं है, कोई रेंडम है, बस प्लानिंग नहीं है, वो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, वो हैंड होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड डोंट रिलाय ऑन सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन। आजकल एआई तो इतना एडवांस है, आप सबको पता है, इवन कैन मिमिक योर वॉइस, राइट। तो आप ज्यादा सोशल मीडिया में ना जाएं, उसको वैलिडेट करें एक सोर्स से दूसरे सोर्स से, और उसको वैलिडेट करने के बाद अपना डिसीजन लें, है ना। each rupee has a potential, and that potential is compounding, right? Compounding is the eighth wonder of the world. अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम चूज करें, क्या प्रोडक्ट मेरे लिए फिट है, या मेरे लिए एफडी फिट है, क्या मेरे लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी फिट है, क्या मेरे लिए एमएलडी फिट है, मार्केट लिंक डिबेंचर फिट है, क्या मेरे लिए रियल एस्टेट फिट है, क्या मेरे लिए पीएमएस फिट है, क्या मेरे लिए एआईएफ फिट है, क्या मेरे लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फिट है। तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन समझ के, विच इज एसेट एलोकेशन, उसको प्रॉपर समझ के अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन वी विल बी इन द राइट ट्रैक, वी विल अवॉइड। And as Aditya shared, protection is very, very important. Adi, if you can just move to the next slide. Protection is also very, very important, right? So protection, allocation, and optimization, these are very, very important. And review them periodically. वो भी important है। Adi, can you just move to the next slide? तो पीरियोडिकली इनको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर इन अ डायनामिक मार्केट, राइट। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दीज 5 मिस्टेक्स एज ऑफ नाउ। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्लान बिफोर द प्रोडक्ट, कि आपको क्या चूज करना है। प्रोटेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज जब आपके पास प्रोटेक्शन होगा, सेफ्टी नेट होगा, देन यू कैन स्प्रेड योर आर्म्स एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, राइट। चाहे वो लोकल इन्वेस्टिंग हो, ग्लोबल इन्वेस्टिंग हो, कुछ भी हो, तो मेरे गोल के हिसाब से होगा। मिजरेबल हो और पीरियोडिकली रिव्यू करना है, बिकॉज वी आर इन डायनामिक वर्ल्ड, वी आर नॉट इन स्टैटिक वर्ल्ड। ठीक है। तो आई थिंक विद दिस आई विल स्टॉप माई सेल्फ हेयर ओनली, बिकॉज टाइम इज नॉट अलाउिंग मी टू मूव अहेड। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। Adi, over to you, if you can just take it forward. There is few questions here with me, so I think it's a good time to take them. Maybe it's common for all. Market अभी नीचे है, shall we start SIP now? So एक ये सवाल है योगी, it's a very common, लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या और वेट करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब योगी आप बताओ, क्या आप बोलना चाहोगे? सर देखिए, मैं आपको, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसका जवाब ये होगा, ऐसा हमारी स्लाइड में भी आया था, डोंट टाइम द मार्केट, डोंट लुक फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। एंड अगर एसआईपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म ही बताता है कि ये है क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर सबसे अच्छा काम आज की डेट में आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो भी आप खरीदेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप खरीदेंगे। एंड इट इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। देखिए, लाइफ में जब भी डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, तो आप कुछ अच्छा ही करेंगे, चाहे वो 45 मिनट का वॉक हो, चाहे वो आपका रेगुलर सेविंग हो, जैसे आरडी कर देते हैं लोग बैंक में। डिसिप्लिन जहां आ गया वहां पे आप कुछ अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इसको बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे निवेश.com में जाके किसी वेल्थ एक्सपर्ट से बात करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने टाइम
होराइजन के हिसाब से कोई ना कोई एसआईपी आप चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बशर्ते इट शुड बी वेल डिस्कस्ड एंड थॉरली अंडरस्टूड ऑन द रिस्क पार्ट। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा है ये एसेट क्लास बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इधर ही लगा देता हूं, पता लगा 6 महीने बाद पैसे की जरूरत थी, वहां उस समय मार्केट नीचे आ गया। तो ये एक्सपर्ट्स के साथ अगर बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे। ओवर टू यू आगे। Yeah, thanks. Yeah. There is another question. There is one question which is clearly saying that gold बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैंने गोल्ड की एसआईपी की है और मैंने एसआईपी कुछ स्मॉल कैप के फंड्स में भी की है लास्ट 2-3 साल से, और उन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न भी दिया। अब मैं आगे क्या करूं? सो मैं I'll just show you, बिकॉज इसमें गोल्ड और इसमें स्मॉल कैप फंड के बारे में बात हो रही है। आई जस्ट वांट टू शो one data here. I don't know, I kept it handy, so I think it will come handy also for everybody. This is a good data. Is this Excel visible? People can. यस यस यस। Yeah, yeah. So what this Excel says is that definitely आप लोगों ने कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने लास्ट 2 सालों में अच्छा रिटर्न दिया, पिछले 1 साल में तो खास रिटर्न नहीं दिया, बट हर एक एसेट क्लास की एक एक नेचर होता है, और हर एक का एक लाइफ साइकिल होता है। तो मैंने एक डेटा बनाया था जो ये दिखाता है कि हर कैलेंडर ईयर में पिछले लगभग 12-15 सालों में कैसे ड्रॉ डाउन आए हैं। रिटर्न डेफिनेटली हमारे सामने है, बट हम रिटर्न देख के तो कैरिड अवे हो जाते हैं। बट आई जस्ट वांट टू keep you aware that there have been the times where wealth have eroded, where people have investors were looking to get cover, कहीं पे शेड ढूंढ रहे थे कि क्या करें, कैसे बचें। Like 2008, many of you may be experienced or not experienced, but we were the people who were initial careers when 2008 happened. So Sensex and Nifty 50, which is very popular index in India, it went down by minus 50%, more than 550%, and none of the crisis was coming from India. That whole problem was US problem, and impacted. We were 50% impacted. More than 50% of our market got eroded. And मैं कुछ कंपनीज के बारे में बात करूं तो those companies are nowhere now, and those were the companies which people were swear about, you know. So इस तरीके का impact होता है. So Nasdaq, it's also a very popular index in US. Most of the IT names are there. It went down by 42%. Just because there was one paper of Lehman Brothers which got collapsed, one one debt paper which got collapsed, पूरी industry, पूरा different sectors impact हो गए. So why I am showing these? Then there is Nifty 15-2011, 24% down, just because यूरोप में एक यूरोजोन क्राइसिस हुआ, इन्फ्लेशन उस वजह से हमारा हाई हुआ, and then there was a government which was going through a policy paralysis because it was the coalition government. So none of the reforms came in those times, and it was a very painful period for investors, where 24% down. Nifty 50 is a large cap index, so don't think that the companies can go on and on every year giving returns. And same way, when we talk about small cap have been doing wonderfully well, even mid cap doing good over last 5-6 years of CAGR. But we should not get carried away again. There were the times where 33% of erosion happened. सो मार्केट जब बढ़ता है तो छोटे वैल्यू से बढ़ता है, बट गिरता है ना तो आपके टॉप वैल्यू पे गिरता है। तो एनी करेक्शन, आपने 50 रुपीज इन्वेस्ट किया था, इट गॉट डबल्ड इन 3 ईयर, बट मार्केट इज डाउन बाय 30%, so 100 rupees is now 70, so ultimately you end up making only 20 rupees of profit. So it is very important to balance out whenever you make good return. Either you do your balancing or come and bring some expert with you to do that. But देखिए 2011, 2013, 2015, 2018, continuously small cap was having a very bad time, and just before that they were into a bull run only. So the cycle change hota hai, and everything goes toward, which goes up has to come down someday. So this is kind of cycle. Then we look into the crypto, which is a craze then also and now also. Just because there was one COVID, it was not COVID, but then one coin got burst just pre-COVID scenario. It is talking about.
that bubble got burst, and from thereafter it tanked 73%. And Bitcoin is like everybody's portfolio. If you speak to any large investors these days, they are also putting money there. But what is that behind Bitcoin? What is powering it? Nobody knows. So I will say that first educate yourself and then invest. No harm in investing, but you should take that risk which you can take, which can forego. Yeah, Adi, one line I want to say. please add. जस्ट वन लाइन टू ऐड, जिनका ये प्रश्न है, मैं कहूंगा कि बने रहिए क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है ना, जब ये हमारा सैंक्शन लगा था लास्ट टाइम पोखरण के टाइम पे, तो उस समय पे हमने क्या किया था पता है? पैसा कहीं से नहीं मिल रहा था, इंडिया उतना डेवलप भी नहीं था और हमारे पास उतना ज्यादा स्किल्ड लेबर भी नहीं था। हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिसर्जन इंडिया बॉन्ड, आई डोंट नो आप लोग इस समय जानते हैं, समझ मतलब इस समय मेमोरी में होगा कि नहीं, रिसर्जन इंडिया बॉन्ड हमने निकाला था, राइट? और लगभग कितना निकला था? 5 बिलियन, राइट? और हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ था 5.2 बिलियन। तो स्ट्रेंथ इंडिया का उस समय का और आज का कुछ बेटर ही है। तो आप कंटिन्यू करिए अपने इन्वेस्टमेंट को, लेकिन अपने गोल को मिस मत करिए और एसेट क्लास का रिस्क ध्यान रखिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। Yeah. थैंक यू आदि। So yeah, yeah. Thank you, Yogi. So same way, gold also goes through their own cycle. Gold have also tanked in 2013, giving no return at all, even negative in couple of years. And same way, there was a study from Prop Tiger, which is handling RBI's home prices index. So in 2011, across India, average real estate prices went down by 10%. And then in the COVID times also, in those 2 years, market was down. So hi, here the Nikhil have raised hand. Or you can write it on chat as well. So Nikhil have wrote in the chat as well. So he's saying already have real estate plus FDs. Should I move into equities? So if you have seen our 5 mistakes, if we whatever we have presented, it is about you, your requirement, your goals of life, Nikhil. We don't know you, how we can recommend. If you already have real estate and FDs, should I move into equities? Definitely, you should have diversified basket of investments. You should definitely look into, but first look into your requirement. If it is if it is completely hard assets, definitely I'll tell you to have a growth assets also. FDs can't meet even inflation, they can't beat inflation. Real estate overall average returns are 6 to 7% generally with the inflation. In sometimes years they do well, sometimes they are stagnant. But overall, this definitely you should have an equities into your portfolio. But what kind of equities? It depends upon your nature also, your requirement also. There are high risk equities also, there are stable equities also. So you should of course speak to some expert, if you're not into investing. So I'll suggest definitely equities are definitely a good move if you do it, but in the right way. Hope it answers, Nikhil. Thank you. He's writing thanks. Yeah. Yeah, so I think these were the immediate questions which came to us. There are few things which we would like to share. I'll just go back to our slide. So we as a Nivesh, we not only just do with clients, we actually plan for them. We actually do them, help them in making their portfolio spread out across various products by only doing their financial plans with proper review time to time basis. Whole sort of important is towards protection also, and keep on optimizing whatever best we can through their finances. That is how we are doing today. Nivesh is handling 60,000 plus clients on their portal. You can also reach out to us through our app on our web portal, which is nivesh.com. You can reach us out there, and then we can also handhold with you through our advisors. I think we are almost at the verge of ending this presentation. It was lovely having you. Yogesh, any words to add in the end?
Thank you so much, all of you, taking out time, joining us. Please go to our website, nivesh.com, put your queries, and you will get a definite answer of your, any concern that you have. Thank you. I think Nikhil also have added again raised the hand in the last moment. So, what is the right size of an emergency fund for entrepreneurs whose income is irregular? So, I think this have been many of the cases in past we have faced these kind of questions. So, for an entrepreneurs, you have to look in at least what kind of how your income on a regular basis coming. If it is because any salaried person at least should have a 6 months. But in case of an entrepreneur, you should look at the expenses of an at least a year or 2 years, which can give you mental stability also. So I think because it's also depend upon your industry how stable it is. So if the payments are irregular, then you should at least have 2 to 3 years of income with you, in always handy, available in the liquid funds or wherever, at least earning some bit of inflationary returns. Although, but if it is very regular income, at least meeting your expenses, not big large sum, but meeting your expenses, then it at least should keep 6 to 9 months with you. Yeah, hope it answers. You can also speak to our wealth advisors, by logging into our app. We definitely get in touch with you. Yeah. Thank you. It was lovely having you. I think we will be doing these kinds of webinars frequently, and would love to come back and and would like to see you back again. So, thank you. Thank you, all of you. Thanks.